Hello everyone, welcome to another session of Unacademy. And in the previous session, we have already done November 22, all the suggested answers and your question paper discussion. This session, we'll be covering up the rest, which is May 22 examination, suggested answer as well as the question paper as well. Okay. So before that, please do confirm me whether I'm audible or not, whether you can hear me properly or not. Right, so that once we start, there is no breakage to the flow of the class. Yes, everyone, please confirm once. Please confirm once. We have on our screen, firstly, we have the May 22 paper, and then we have the suggested answer sheet as well, which has been released by ICAI. So just let me confirm once. Let me confirm once. Okay, I think there was some issue with the camera, but now it has been fixed and I might be visible now. There was some technical issue. My video was not coming on the screen. Then I had to fix it somehow. Okay. Let me check whether I'm visible. Yeah, I'm completely visible now. I'm so happy that this has worked out. And good afternoon, everyone. A very warm welcome to another session of Fun Academy. My name is Isha Verma, and I am a CA finalist. In this session, we'll be covering up all the May 22 examination questions which has been asked by ICAI, and also we'll also be discussing the suggested answers given by ICAI, and we'll be understanding how the writing pattern of examination should be and how to score more marks when you are answering, how you should be presenting the answers. We'll be covering all these points in this class itself. Okay, so let's move on with the video, with the lecture. And if you have any doubts, you can drop down all your doubts in the comment section below so that I can cover all of them. And there's no like chance of having no clarity about on topic or something. So yeah. So as you know that I've already completed the revision of chapter number 1, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. For chapter numbers 1, 2, 4, 5, 6, you'll find two videos. Okay, you'll find two videos. Why? In one video, you will find a 45 minutes full revision, and the other video and in the other video you'll find all ICAI questions solved, right? Whereas for chapter number 3, 7, and 8, there is just one video each. We'll have both the things in the single video itself. For half part we'll have the revision, and for the next half we'll have all the discussion. Okay, discussion of ICAI back questions. So as you know, your examination paper is divided into two parts basically, and the first part is also your MCQ, which comes for 30 marks. So if we talk about the question paper, which is descriptive, which is the written part, it is divided into two parts, right? So we have section number A and section number B as well. Section number A and section number B as well, right? So in section A, we have EIS. Yeah, in section number B, we have SM. But even SM has been divided into two parts. First part will be a case study based question, and the second part will be direct, right? And not only that,
In EIS, the first question is compulsory, and similarly for SM, question number 6 is compulsory, right? Rest 7, 8, or 9 and 10. It may say you will have to just leave one and choose the rest. Okay, as you can just see, question paper comprises of 5 questions. Question number 5, 1 to 5, and then your question number 1 is compulsory, and you have to answer any 3 out of the remaining 4. Similarly, B part, you have question number 6 as the compulsory question, and out of the remaining 4 questions, you need to answer 3 of them. So, yeah, so that was how the pattern is supposed to be. And now let's move on the past year question. Okay, so let's move on to the past year questions. This is the first question on your screen, and this is the compulsory question. So you need to attempt it anyhow, even if you are not aware, you'll have to attempt it. Good afternoon, Simapreet. Good afternoon. Good afternoon, Pravash. Yes. So stay tuned to my classes, because after this, we'll also be taking up two RTPs, two MTPs, and then we'll come on to MCQ questions as well. So we'll pick up important questions released by ICAI for MCQ. So let's move on. बहुत लंबी सी केस स्टडी है, बट मैंने हमेशा आपको शॉर्टकट बताया है. शॉर्टकट क्या है? आप पहले पढ़ेंगे लास्ट का आंसर, लास्ट का क्वेश्चन, सो दैट जब आप ये पूरा पढ़ें तो यू कैन जस्ट रिलेट टू व्हाट हैज बीन आस्क्ड. ठीक है, तो हम पहले लास्ट का पार्ट पढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक टूल टू बी यूज्ड by Paramount Group of Company. Also explain in brief the common elements involved in using this tool. ठीक है, क्या आपने पढ़ लिया? कॉमन एलिमेंट्स पूछ रहा है, और पूछ रहा है क्या? आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक टूल. नाउ यू कैन सी द मार्किंग स्कीम. सो इट्स 1 plus 4. So 1 mark for identifying, and then you have to at least write 4 more points to for maximum, right? 4 more points for answering the second part, which is common elements involved in using the tool. Okay, so let's do it now. Paramount Group of companies having a strong footprint in areas of aviation, healthcare, fast moving consumer goods, home appliances, and electric goods. Yes. Paramount Group of companies is having a strong footprint in areas of aviation, healthcare, fast moving consumer goods, home appliances, and electronic goods. Processes, technologies, and marketing capabilities are different for each business. However, each business operates among a group of rivals that produce competing products. Okay? In order to get ahead of the competition and to contribute for sustained competitive advantages, company intends to improve customer service and in turn increase its market share. Yeah. To achieve this, company is desirous to analyze its product and processes and service levels for each of its segments. अभी तक क्वेश्चन पढ़ के ज्यादा कुछ एनालाइज नहीं हुआ है. क्या बस इतना सा एनालाइज हुआ है कि वो थोड़ा कंपटीशन को टक्कर देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. लेट्स मूव ऑन. Company is studying various trade publications, understanding the taste and preferences of customers, meeting with suppliers, and also using other relevant information available in public domain for each of its business operations. After studying as above, company wants to compare diverse range of practices and processes being followed by acknowledged leaders in the industries, measure its own productivity, and identify the gaps. Instead of following bricks and mortars practices, company will be setting goals to be achieved for improvements in its products, processes, and services based on the best practice being followed by the company on a regular basis.
जब मैंने ये लाइन पढ़ा, मुझे क्लैरिटी आ गई इसका आंसर क्या होना चाहिए। एंड इफ यू थिंक कि मैं पहले से ये पढ़ के आ रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, सो दैट्स नॉट द केस। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द इंटायर केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि मैं बताऊं कि मैं कैसे आंसर गेस करती हूँ या कैसे आंसर को रिलेट करती हूँ। yeah. So if you think that I've already prepared the answers or checked the answers, that's not the case. Okay, ठीक। बट मुझे अभी तक यहाँ तक आई डिड नॉट हैव क्लैरिटी कि एग्जैक्टली क्या होगा आंसर। द मोमेंट आई रेड दिस लाइन ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड बाय द कंपनीज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये लाइन पढ़ते ही मुझे आ गया अंदाजा कि ये की बात कर रहा है। ठीक है, सो एनीवन इन द आंसर सेक्शन, comment section, who would love to answer? Anyone who would love to answer? Anyone who would love to answer? Okay, I'll tell you why this particular line gave me a hint towards the direction of the answer. Okay, तो जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 8, तब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था बेंचमार्किंग, एंड वहां पे मैंने मार्क भी कराया था। इफ यू सी अ वर्ड लाइक बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऐसा कोई वर्ड आपको मिल जाता है, का मतलब वो बेंचमार्किंग की बात कर। ठीक है, एग्जाम में आपको स्टडी मटेरियल अगर आपने एक बार भी गो थ्रू किया, इट विल हेल्प यू अ लॉट। so if you're missing out on practicing study material, please don't do that। मेरे वीडियोस जो है ना 45 मिनट्स के हैं बस। मैं अपनी वीडियो, आप किसी भी वीडियो को देख लो, देखिए 45 मिनट्स में अगर आप एक बार रफली अगर स्टडी मटेरियल को देख भी ले रहे हो, तो ये वर्ड्स जो है ना आपके दिमाग में घुसे रह जाएंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि मैंने उन वीडियोस में स्पेशली इन वर्ड्स को रिपीटेडली रिपीट किया है, सो दैट दैट गेट इनटू योर हेड। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने कहाँ से एनालाइज किया कि ये बेंचमार्किंग का क्वेश्चन है, बिकॉज दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला चीज क्या है बेंचमार्किंग में। So let me show you once। Let me show you chapter number 8, right? And then let's see the benchmarking concept here. Now, look at this. See this. In simple words, benchmarking is an approach of setting goals and measuring productivity based on the best industry practices। देखो एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ से उठकर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द कंपनीज। Yeah. Now this is a pure question of benchmark. I believe ये May 22 वाला थोड़ा सा November 22 से एक लेवल अच्छा था, right? November 22 I just thought कि उसका question number 1 was also very comparatively easier. So I believe the next attempt May 23 में you should be well prepared. बस अच्छे से prepare करके जाना पड़ेगा। Okay. So let's see the suggested answer। इसमें क्या बताया है? Let's match my answer। आ गया, ये देखो। Paramount Group of industries companies have been using benchmarking as a strategic tool. Why? Because benchmarking is an approach of setting goals and measuring productivity of the firms on the best industry practices against the products and services and practices of competitors or other acknowledged leaders in the industry। यहाँ पे best practices word use किया था, and that made us realize that this is a benchmarking, right? This is a benchmarking done। उसके बाद कह रहा है कि बेंचमार्किंग जो करते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व। तो हमने करा था क्लास में। तो वी हैव द प्रोसेस, ये वाला देखो, स्टेप्स इन बेंचमार्किंग। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 6
6 step process. So first you'll identify why you need benchmarking, why, and then you clearly understanding the existing business process. पहले अपने existing business process को देखो, where are you standing in the present, and then go for all the best practices. Identify what are the best practices. मतलब आप जहाँ पे present में खड़े हो वो देखो, and then you see what are the best practices, what are the best practices, and then you these two compare these two, your present and the best practices. Yeah, prepare a report बनाओ कि क्या क्या कमियां हैं, and last में steps लो रिपोर्ट लेने बनाने के बाद, and then you evaluate again. ठीक है, सो आपका प्रेजेंट यहाँ है, आपका बेस्ट यहाँ है, आपने गैप मेजर किया, आपने रिपोर्ट बनाया, आपने स्टेप्स लिया, तो आपका अब प्रेजेंट बदल जाएगा. सो फर्स्ट आपका अगर प्रेजेंट यहाँ था, अब मान लो आप थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे, एंड देन यू इवेल्युएट हाउ बेटर यू हैव बिकम. दिस इज अ 6 stepped process. It's called benchmark, right? Which is a 6 stepped process. So you'll have to see, explain in brief the common elements involved in using. Yeah, yeah, yeah. Everyone. Yeah. देखो, ये तुम कहोगे कि आपने बताया ये प्रोसेस का नाम है, वहां पे क्वेश्चन में लिखा है एलिमेंट्स बताओ, आप ये बता रहे हो एलिमेंट्स करके तो कुछ है ही नहीं. फिर से देखोगे, फिर से आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कॉमन एलिमेंट्स आर एज फॉलो. ये प्रोसेस भी यही है और कॉमन एलिमेंट्स भी यही. दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग फ्रॉम स्टडी मटेरियल पढ़ो भाई, बहुत फायदा है, बहुत ही ज्यादा. Yeah. Now let's move on to the next question. Question number 7. Good health is an association of person AOP involved in AOP, providing awareness to downtrodden on immunization, vaccination, and sanitation and other health and hygiene issues. It is a non-profit organization working in coordination with hospitals, medical support centers, and local administration. You are asked to take over the organization and manage it in a better way. Yeah. आपको बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन को लो और इसको अच्छे से मैनेज करो. Identify whether the concept of strategic management is relevant in this connection, and if so, what basic activities perform in order to manage it effectively. Okay. तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एनपीओ है क्या, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है, क्वेश्चन नंबर 1. एंड अगर रेलिवेंट है तो व्हाट बेसिक एक्टिविटीज वुड यू परफॉर्म इन ऑर्डर टू मैनेज इट. बेसिक एक्टिविटीज आप क्या परफॉर्म करोगे. ठीक है, पहले बताओ, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है एंड हमने ऑलरेडी पढ़ा है whether it is a non-profit organization or whether it is a profit-making organization, doesn't matter at all. We need strategic management everywhere. We need strategic management everywhere, right? क्यों? क्योंकि strategic management is not just about making profit, it's also about how you're using the resources effectively and efficiently, and how we are managing things in a better way, right? Even non-profit organizations, they are getting funds, right? तो fund अगर आ रहा है तो उसको कैसे utilize करना है. और यहाँ पे आपसे बात की जा रही है किसकी, कोऑर्डिनेशन विथ मेडिकल सपोर्ट, तो मेडिकल वाले की बात की जा रही है. तो हमने पढ़ा है 3-4 टॉपिक्स की, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विद एनपीओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन एजुकेशन सेक्टर, एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन मेडिकल सेक्टर. Okay, now see again, the marking scheme is 1 plus 4. So 1 mark for identify whether the concept is relevant or not, and then 4 marks for the basic activities that you will need to perform. Okay, so let's move forward and check whether suggested answer में यही बात कही गई है. Yes, यही बात कही गई है. देखो, concept of strategic management process is effectively being used by a number of non-profit or charitable organizations.
While good health may have social and charitable existence, it still has to generate resources. अभी तक मैंने यही बताया. You have resources and you'll have to use them wisely, and skill is strategy management is an important tool. Use them wisely to achieve organizational objectives. Organization needs to be managed strategically, irrespective of whether they have profit or not. Strategy management in good health should essentially cover analyzing and interpreting the strategic intent in terms of vision, mission, and objectives, generating resources required in terms of finance and manpower, so volunteers, paid employees, what analysis karo, then setting goals in the drawn trodden area and terms of geographical coverage and number of drawn trodden, analyzing the desired future position with the past and present situation. अब आप कहोगे ये तो पार्ट हमने कहीं भी स्टडी मटेरियल में नहीं देखा, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि even case studies are of two types, which are general and another one is specific. जनरल मतलब आपको उसी केस में से आंसर्स ढूंढना होगा, और स्पेसिफिक मतलब इसके पहले जो हमने पढ़ा था बेंचमार्किंग, और उसमें लिखा था व्हाट आर द एलिमेंट्स, अगर ऐसा कुछ आ रहा है जिसका डायरेक्ट आंसर आपको स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक केस स्टडी. तो वहां पे आपको अपने मन से कहानियां नहीं लिखनी, यू हैव टू रेफर इट टू स्टडी मटेरियल वंस. ठीक है, तो वो आ गया आपका स्पेसिफिक. कौन सा हो गया? जो आपके स्टडी मटेरियल रिलेटेड है. समझ आ रहा है? स्टडी मटेरियल रिलेटेड है. Case studies are even of two types. Number one is the general, when and only you have to answer the case answers. You have to answer in the based of cases, and then in the case studies which are specific, you'll have to refer to study material and वहां से कोई concept डायरेक्ट पूछा गया होगा ही होगा, चाहे केस घूमी घूमी हुई होगी, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वो कुछ ऐसा होगा जो स्टडी मटेरियल का डायरेक्ट होगा. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ये पार्ट जो था कॉमन एलिमेंट्स involved in using was a topic which was directly from the study material. Okay, everyone. Any doubts still here? You're watching the session. Do comment once कोई doubt है, कुछ है. Are you going with the flow? I'm not very good at cracking jokes and talking इधर उधर का थोड़ा. So when I'm teaching, I'm like too much focused. उनको पता ही नहीं चलता है कि मैंने ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, जल्दी कवर करा दिया, क्या किया है एग्जैक्टली. ओके. ओके, एनी डाउट टिल हियर? आई होप देयर इज नो डाउट. तो ये वाला जो केस स्टडी था दैट वाज अ जनरल केस. तो आपके अपने आप से लिखना था कि अगर ये गुड हेल्थ है तो, और इसका काम क्या है? उसका काम है कोलैबोरेशन करना. सो बेसिकली अपने विजन पे काम करो, कि अपने गोल्स को देखो मीट हो रहे हैं या नहीं, फाइनेंस देखो, मैन पावर देखो, can use all the tools called SWOT analysis, etc. Right? Question number 1 is done. And now, sorry, question number 7A part is done. And now we have question number 7B part. Is it imperative to segregate top level strategies into viable functional plans and policies? Do you agree with this statement? Support your answers with reason. Okay. The question है, टॉप लेवल स्ट्रैटेजीज होते ही है ना. It is imperative to segregate top level strategies into viable functional plans and policies. Do you agree with this statement? Support your answer with reason. Okay. So basically इनका कहने का मतलब है, जब टॉप लेवल की स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी होती हैं, टॉप लेवल की स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी होती है, why a for functional
level plans and policies. Good afternoon. Thank you for joining this session. काफी लेट ज्वाइन कर रहे हो, काफी ज्यादा लेट. ठीक है. सो कहने का मतलब है कि अगर टॉप लेवल स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी हैं, तो फंक्शनल लेवल के प्लान्स और पॉलिसीज की जरूरत क्यों है? टॉप लेवल वाले ही सब कुछ करें. ठीक है. क्या इट इज इम्पेरेटिव टू सेग्रीगेट मतलब सेपरेट करना? इज इट इम्पोर्टेंट दैट वी सेग्रीगेट द टॉप लेवल एंड द बॉटम लेवल स्ट्रैटेजीज एज टू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, राइट? बेसिकली हमें यहाँ पे बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शनल level strategy. You have to basically tell the importance of functional level strategy. I'll show you once. This is again a direct question. ये कुछ नया question नहीं है. It is not a new question. And if we move on to chapter number 6, and then you'll find the answer, direct answer to this. Kira, why do need functional strategy? जब हमने ये चैप्टर करा था तब मैंने क्लास में भी कराया था कि यस इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो टॉप लेवल है उनको नीचे तक लाकर काम कराने का काम फंक्शनल लेवल के मैनेजर्स करते हैं, राइट? टॉप लेवल कैन फोकस मोर ऑन समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट एंड नॉट ऑन द फैक्ट कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? So function strategies lay down clearly what is to be done at the functional level. They provide a sense of direction to the functional staff. They are aimed at facilitating the implementation of corporate strategies and the business strategies at the business level. They act as the basis for controlling activities in different functional areas of business. They help in bringing harmony and coordination, and they're formulated to achieve major strategies. These strategies help the functional managers in handling similar situations occurring in different functional areas in a consistent manner. Hey, ये आपके 5 पॉइंट्स है. बेसिकली अगर मैं हेडलाइन कराऊं, अंडरलाइन कराऊं दोबारा से, what important pointers are here? Number one, sense of direction. It gives a sense of direction. They're aimed at facilitating and implementation of corporate strategies, controlling activities in different functional areas, bringing harmony and coordination, and functional manager handling similar situation occurring in different um, handling situations. Okay? These are 5 pointers that you need to answer whenever you are being asked the question, why is there a need of functional strategy? Okay? Okay. Let's see the answer. Let's see the answer. Oh, यही है आंसर, ये देखिए. Yes, it is imperative to segregate the top level management strategies into functional level strategies. क्योंकि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स है वो डायरेक्टली हमें काम नहीं करवा सकते. बीच में हमें फंक्शनल लेवल चाहिए होगा, फंक्शनल मैनेजर्स चाहिए होगा, राइट? तो फंक्शनल मैनेजर्स के फंक्शनल स्ट्रैटेजीज भी चाहिए होंगे. एंड वही सारी चीजें दी गई हैं कि डायरेक्शन मिलता है, फेलिसिटेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन होगा, कंट्रोलिंग, हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन, similar handling similar situations. There are 5 pointers that you need to write कि ये सब क्या है? Importance of functional level strategy. These are the importance of functional level strategy. Yeah. Let's move on to the next question. XYZ
is an automobile company that offers diversified products to all customer segments. COVID-19, the changes took place in the economy, forced the company to change its strategy. Being the CEO of the company, what stages would you follow for developing and executing strategy? Yes. So there is a वो process है पूरा to implement a new strategies, right? We have a set of processes. So first you'll have to develop a vision, and then do the environmental organization strategies, formulating the strategies, implementing, and then controlling and evaluating. Yeah. So these are the steps. एंड क्योंकि इन्होंने कोविड की बात कर दी है, तो आप ये भी बताएंगे कि अगर चेंजेस होता है, तो हाउ डू वी हैव टू अडेप्ट टू द चेंजेस? द चेंजेस आर हैपनिंग, how do we have to adapt to the changes? Okay, that was in chapter number 7. Yes. So how do we have to adapt to the changes? We even need to tell that, right? क्योंकि कोविड की बात कर दी, that means there is a change. So change is supposed to be accepted and adapted. I believe I have been. Yeah. So in eight chapter, yeah, strategic change. And you can just see I've talked about strategic change already, right? Yes. So let's answer the question now. So basically, उसमें आपको बताया जा रहा है कि there are changes happening in the environment, and they want to go through the stages for developing new strategies. Okay. So of course, developing and executing new strategies, you'll have to follow the steps. सबसे पहले आप अपने vision को set करोगे. फिर क्या करोगे? आप अपने environment को analyze करोगे. How the environment is going about, right? And then you will frame the strategy, execute the strategy, evaluate and control, right? So you'll have the vision, you'll do the environmental analysis, then you'll go for the formulation of strategy. Then later on, implement the strategy, execute the strategy, and finally evaluate and control. But since the environment in which the organization is working, chapter 7, no, chapter 8 है, chapter 8 था ये. Yes, मैं confused हो जाती हूँ chapter 7 और 8 में. I just get confused. मैं हर हमेशा इट्स लाइक मैं बचपन से ही जब भी मैंने एसएम पढ़ा है, आई गेट कंफ्यूज chapter 7 and 8. Yeah. So this is question. COVID-19 happened, and then they want to frame new strategies to how they will follow. Three steps can be followed by CEO. Number one, recognize the need for change, create a shared vision, and then institutionalize the change. पहले आप देखो क्या जरूरत है चेंज की, देन विजन को शेयर करो, एंड देन उस चेंज को इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट कर लो, इंस्टीट्यूशनलाइज कर. These are the three steps to adopt changes which were caused by COVID-19. COVID-19. ठीक है, आपको आंसर राइटिंग भी बता रखा है मैंने पिछली क्लास में. तो कुछ क्वेश्चंस हुए जहाँ पे आपको पता है वो 4 टाइप्स के होते हैं, तो डू राइट इट इन द फर्स्ट लाइन. जेनरिक स्ट्रैटेजीज आर 4 टाइप्स, एंड देन यू मूव ऑन टू द केस में क्या हो रहा है, देन यू राइट द एडवांटेजेस व्हाट एवर इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 8B.
Due to reoccurrence of various variants of COVID virus, coronavirus, LMN Limited is facing unstable environment. Yeah? It has started unbundling and disintegrating its activity. Okay. It also started relying on outside vendors for performing these activities. Okay? ये जो एक्टिविटीज इन्हें करना है इन्होंने रिलाई करना शुरू कर दिया टू द आउटसाइड वेंडर्स. Identify the organization structure LMN Limited is shifting to. Under what circumstances this structure becomes useful. तो हमने पढ़ा है सारे. We have already read organization structure. I believe वो chapter number 7 था और 8 था. Chapter number 7 था. I believe it was chapter number 7, जहाँ हमने organization structure पूरा पढ़ा था कि different types of organization structure होते हैं. Functional, divisional, matrix, project, right, network, hourglass and so on. ठीक है. तो इन्होंने पहले तो पूछ लिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताइए. अब जो मैंने एक वर्ड और यहाँ पे हाईलाइट किया है वो किया है आउटसाइड वेंडर. ठीक है. आउटसाइड वेंडर. इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि पहले ये फंक्शन ये लोग खुद से करते थे. पूरे फंक्शंस को ऑर्गेनाइजेशन खुद करती थी. Now what happened due to coronavirus? What happened? They started disintegrating. तो फंक्शन ए हम करेंगे, फंक्शन बी को क्या करते हैं, आउटसाइड से करवा देते हैं, आउटसोर्स करवा देते हैं. तो हमने पढ़ा था एक ऐसा फंक्शन होता है जहां पे अगर हम चीजें आउटसोर्स करा के सबको मैच कर रहे हैं. So we are not actually having those sources. We do not have a physical finance team or marketing team, but rather we are outsourcing a team for finance and marketing. This is called network structure. Called network structure. Outside vendors से. सच्ची में आपने इतनी देर क्लास देख लिया होगा. सच्ची में सब कुछ ऑन द स्पॉट सॉल्व किया है आप लोगों के साथ. तो बेसिकली मेरे को इन वर्ड्स से ही हिंट मिल रहे हैं. I have not looked at the answers, suggested answer, right? I have not even practiced these questions beforehand. I'm doing it on the spot for you all. ये तो मुझे जिस वर्ड से हिंट मिल रहा है आपको भी धीरे धीरे इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि एक कोई वर्ड मिले जिससे हिंट मिले. उन्होंने कह दिया आउटसाइड वेंडर और फिर कह दिया ऑर्गेनाइजेशन. आउटसोर्स कुछ भी हो रहा है, आउटसाइड से कुछ भी करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर. को बताना है कि क्यों नेटवर्क स्ट्रक्चर यूजफुल होगा. अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में. तो आई बिलीव कि एक क्वेश्चन ना स्ट्रक्चर से हमेशा आ जाता है. लास्ट के पेपर में था, इट वाज अबाउट एसबीयू एंड टुडे इट इज अबाउट नेटवर्क स्ट्रक्चर. अच्छा गाइस, इफ यू आर हियर डू लेट मी नो कि एक और क्वेश्चन पेपर करें या आरटीपी एमटीपी स्टार्ट कर दे. तो यू हैव गॉट टू ऑप्शंस. इफ यू चूज एक और क्वेश्चन, मतलब हम नवंबर हम क्या करेंगे, नवंबर 21 को भी प्रैक्टिस करेंगे. और दूसरा ऑप्शन आपके पास है, हम आरटीपी प्लस एमटीपी स्टार्ट कर. दो आरटीपीज करेंगे, दो एमटीपी करेंगे, दो दो उसके दो दो अटेम्प्ट के. अगर हम नवंबर करेंगे तब हमारे पास ऑप्शन होगा आरटीपी प्लस एमटीपी. आई थिंक वन वन अटेम्प्ट का ही करने का, वन वन या दो आरटीपी और एक एमटीपी करने का ऑप्शन. एंड अगर हम नवंबर 21 का नहीं डिस्कस करते तो वी हैव गॉट दीज. so what is what is beneficial for you all? दो आरटीपीज दो एमटीपीज करें या एक और नवंबर 21 का एनालिसिस नहीं, आंसर्स. चलो अब आते हैं. ये है आपका नेटवर्क स्ट्रक्चर. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंबाइनिंग ऑल दीज नेटवर्क. तो आप अपना अकाउंटिंग किसी और को दे देते हो, सप्लायर किसी और को दे देते हो, कस्टमर
का सपोर्ट किसी और को दे देते हो, डिस्ट्रीब्यूटर का, मैन्युफैक्चरर का एंड डिजाइनर का किसी और। तो इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है. सो विल हैव टू टॉक अबाउट नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड देन आपको ये भी बताना पड़ेगा व्हाई इट इज यूजफुल. ठीक है. सो लेट्स सी द सजेस्टेड आंसर. The changing environment है, when you do not have the much technology, you can use this. In today, India has becoming the outsourcing hub for many of the global automobile manufacturers. The auto industries comprises of four segments, which are passengers, vehicle, commercial vehicles, and three-wheelers and two-wheelers. ये सब आपको बोलने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता चार सेगमेंट्स है कि आठ सेगमेंट्स है. XYZ Limited is an automobile company that offers diversified products for all customer segments. The company has already in existence, so it has an own vision, mission, strategy to execute achieving its vision. While developing and executing the strategy, XYZ Limited might have followed the five-stage managerial process as given below. Oh, I was reading the wrong answer. Sorry, I was reading the wrong answer. It was Element Limited. Element Limited is shifting to network structure. It is a newer, somewhat more radical organization. Network structure could be termed as non-structure, and it is working virtually. ये सब मैंने word बोला है. तो कभी हो सकता है आपके एग्जाम में ये बोले कि virtually काम कर रहे हैं, eliminating in-house business. ऐसा कुछ word दिख जाए तो भाई ये network structure की ही बात कर रहे हैं एग्जाम में भी. Okay. It is most useful when the environment is unstable and is expected to remain so. Okay. Usually a strong need for innovation and quick response. Instead of having salaried employee, it may contract with people for specific project or length of time. So ये सारी चीजें are the main features and why do we need network structure? Okay? Why do we need structure? We are left with two more questions and then we are done with the analysis and the suggested answers as well. Question number 9, A part. Strategy formulation, strategy implementation are intertwined and linked with each other. Elucidate the statement with suitable arguments. While I was teaching this, I had already mentioned this is one of the favorite questions of ICAI. So यहाँ पे forward linkages and backward linkages की बात करनी. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस की बात करनी. देखो ये बताया था जब आप प्लान करोगे फिर आप एग्जीक्यूट करोगे. ठीक है. फिर कंट्रोल लगाओगे तो आपको अपनी कमियां पता चलेंगी. राइट. ऑल योर मिस्टेक्स एंड गैप्स यू गेट टू नो. नाउ इन्हीं गैप्स को, इन्हीं मिस्टेक्स को, इन्हीं रिव्यूज को यूज करके यू विल प्लान द नेक्स्ट सेशन. So today what happened in my session itself, मैंने वीडियोस, मेरा वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इनिशियली एंड माय वॉइस वाज गोइंग थ्रू. ठीक है. तो वॉइस जा रही थी, वीडियो नहीं जा रही थी. तो आई स्टार्टेड द वीडियो. मैंने शुरू के 4-5 मिनट पढ़ा भी दिया एंड देन आई सम हाउ रियलाइज कि मेरी वीडियो नहीं आ रही है. राइट. तो अब जब मुझे पता चला कि मेरी गड़बड़ी है मैंने तुरंत उसे फिक्स कर लिया. तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम प्लानिंग अ सेशन. प्लान नेक्स्ट सेशन ही लिख दिया. प्लान द नेक्स्ट आपका strategy. The next time while I was planning the session, next time when I'll plan the session, I'll make sure to check कि कैमरा कहीं रुका तो नहीं. वो पहले ही बिफोर हैंड कर लूंगी. ऑल्दो मैं पहले भी किया करती थी. पहले भी आई यूज टू चेक कि कैमरा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. बट कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया. कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के आई यूज टू स्टार्ट द सेशन. ठीक है. एंड में तो इतना यूज टू हो गई. आई यूज टू सिंपली स्टार्ट द सेशन एंड स्टार्ट टीचिंग. Now what happened now because आज मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ ये वीडियो का कि कैसे वो रुक गया. ठीक है. वो वीडियो नहीं आई. So I'll keep this thing in my head and when I'm executing the planning the next session and make sure कि वो वीडियो वाला पार्ट में पहले
करके, ठीक है। So that is how is the backward and the forward linkages. आप बैकवर्ड कैसे लिंक करते हो, क्योंकि आपके प्लान में गड़बड़ी होती है, तब आप जाके कुछ मिस्टेक्स गैप्स रह जाते हैं, हाउ टू ओवरकम दोज गैप्स, आप प्लान में उसको फिक्स फिट करते हो, राइट, उन गैप्स को। लेट्स सी what ICAI has given you for suggested answer. Strategy formulation and strategy implementation are intertwined and linked with each other. Elucidate this statement with suitable arguments. वाह वाह, इन्होंने वही बात करी है फॉरवर्ड लिंकेजेस की एंड देन द बैकवर्ड लिंकेज, ठीक है। तो फॉरवर्ड भी लिंकेज है और बैकवर्ड भी लिंकेज है। आप फॉरवर्ड का भी सोचते हो और बैकवर्ड भी लिंक करते हो, तो पीछे क्या गलत किया वो भी देखते हो, ठीक है। So both the linkages has been answered, have been answered. Both the linkages have been answered. Okay. There are four specific criteria for sustainable competitive advantage that firms can use to determine those capabilities that are known as core competency. Explain. भाई वो फोर कोर competencies की बात करें ना, कि रेयर होना चाहिए, है ना, इमिटेट ना कर पाए, कॉपी ना कर पाए, राइट, एंड ये वाले जो फोर हमने पढ़े थे वही होगा। वैल्यूबल होना चाहिए, नॉन सब्स्टिट्यूटेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, यही तो बताया। कॉपी ना कर पाए, इमिटेट ना कर पाए, वैल्यूएबल है, ठीक है, नॉन सस्टेनेबल है, सॉरी सब्स्टिट्यूटेबल है। तो आपकी जो भी कोर कॉम्पिटेंसी वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी कोई कीमत है। तो वंस पीपल आर नोइंग द वैल्यू ऑफ दोज कॉम्पिटेंसी, तो वो ऑफ कोर्स किसी और के पास नहीं जाएंगे। द रीजन व्हाई iPhone users are always using iPhone and they do not even want to shift to Android, no matter whatever problems they might be facing with iPhone, is that they find value in it, right? Value जैसे उन्हें मिल रहा है वो चीज, the quality, the text, the texture, the features are extremely customizable and better than any other normal life Android. They find a value. अगर उन्हें value नहीं मिला, they will switch to another phone, right? आपने एक महंगा फोन खरीदा and then you realize यार ये तो काम की नहीं है, would you ever buy it again? No, स्विच टू अनदर, सब थोड़े कम में या थोड़ा और महंगा ले लोगे, देख लोगे आपको जो भी पसंद आएगा, राइट। आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज इमिटेट ना हो सके। वाई आईफोन ईयरफोन, आईफोन के आई ईयरपॉड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। I have used both of them. I've used Android normal वाला भी, बोट का, and then I have used iPhone का भी। बोट मतलब I'm not just pointing out a particular brand. I've used बोट, I've used I've used वो सारे का मैंने ट्राई किया है, and then I've used iPhone का। I have felt कि काफी difference। Again the price is also very high comparatively, बोट and इन सब का आ जाएगा आपको 2-5,000 में, आएगा आपको, आएगा noise and all, they come for about 5,000 maximum, whereas iPhone वाला आएगा आपको 20,000 का। But again, there is a difference, there is particular, definitely there is a difference। कुछ है जिसमें quality and the voice जब बात करते हैं तो it doesn't lag, whereas boat वाला I did not like, lag होती थी आवाज बहुत ज्यादा। there is there is some kind of value, right, and something that is not easily imitatable। वो रेयर है, वो फीचर्स रेयर है जो मुझे उसमें दिखता है, फील होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एज यू माइट नो दैट आई एम ऑल्सो अ डांसर, तो मैं वीडियो शूट करती हूँ जब डांस की, सो फॉर दैट आई हैव एन आईफोन। कि उससे क्या होता है कि आईफोन से वीडियो थोड़ी अच्छी बन के आती है, एंड वही जब मैं एंड्रॉइड से करती थी, आई यूज टू आई एम फीलिंग द डिफरेंस। iPhone की quality is very nice when it comes to and how softwares they work upon the phone, hang नहीं होता है, जैसे Android पे वो hang बहुत होता है,
matter कितना भी memory, there is something which is rare. It is not easy. And then non substitutable भी, अगर कुछ rare है तो वो substitute तो हो ही नहीं सकता. So basically these are the four features, right? और यही आईसीआई ने भी बताया है आपको. रेयर होना चाहिए, कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए, नॉन सब्सिट्यूएबल होना चाहिए एंड वैल्यूएबल भी होना चाहिए. Right, people, everyone? Everyone, right? Okay, let's move on to question number 10. ABC Steel Industries finds out that its products have reached at maturity stage and already has overcapacity. Maturity पे पहुंच गए, overcapacity. Therefore, it concentrates on maintaining operational efficiency of its plant. Identify the strategy implemented by ABC along with. So ABC ने देख लिया कि ऑलरेडी क्या है कि मेच्योरिटी पे पहुंच चुकी है चीजें. तो आपने हमने पढ़ा है लाइफ साइकिल, तो देखा है मेच्योरिटी होता है, राइट? तो अब जब हमने पढ़ा था कि मेच्योरिटी पे पहुंच जाए कोई चीज, ठीक है, ये मेच्योरिटी है, तो हमें क्या मेंटेन करना है? अगर मेच्योरिटी पे पहुंच गया एक लाइफ साइकिल की, तो वी वांट टू हैव अ स्टेबिलिटी, राइट? हमें स्टेबिलिटी चाहिए ताकि अब गिरे ना, क्योंकि हमें पता है मेच्योरिटी के बाद दे वोंट बी अ राइज. हमें पता है राइज होना पॉसिबल ही नहीं है. देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि राइज होएगा मेच्योरिटी के बाद. वो प्रोडक्ट का डिमांड या प्रोडक्ट का जो भी है वो राइज नहीं होना है. तो हमें ये स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखें. हैव टू मेंटेन दिस स्टेबिलिटी, राइट? तो उसके लिए हम स्टेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे. तो इन्होंने जो भी अपनाया है, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन मेंटेनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ इट्स प्लांट. आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंटेड बाय एबीसी इंडस्ट्रीज अलोंग विद. इम्प्लीमेंट जो किया है स्ट्रैटेजीज, उसका नाम है स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एंड अलोंग विद रीजंस. ठीक है, रीजंस क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी पे पहुंचने के बाद देयर इज नो वे अ चांस कि उसके आगे कोई ग्रोथ होगी, कि आगे किसी ग्रोथ की गुंजाइश नहीं होती है. सो इट्स बेटर दैट यू वांट टू हैव एन ऑपरेशनल एफिशिएंसी ताकि वो स्टेबिलिटी मेंटेन्ड रहे. So let's move and check back the answer from the study material itself. We have the growth and then we have the stability. I just have to have the stability. I think we have studied. पर होगा. मेरा सबसे पहले ही था स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. एंड कब परस्यू करना है? व्हेन कंटिन्यूज टू सर्व इन द सेम और सिमिलर मार्केट. आपको सेम मार्केट में सर्व करना है, आपको पता है इसके आगे आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, यू जस्ट वांट अ कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंसी, राइट? दीज आर फॉर दोज व्हिच प्रोडक्ट्स व्हिच हैव ऑलरेडी रीच्ड द मैच्योरिटी. अगर मैच्योरिटी तक पहुंच गए तो उसके आगे आपको बस स्टेबिलिटी मेंटेन करने की जरूरत है. एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटेन दी स्टेटस. कोई और इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है, रिस्क काफी कम है. मेजर रीजंस क्या है कब यूज करना है? व्हेन यू हैव द मेच्योरिटी, स्टाफ इज कंफर्टेबल एंड उनको चेंजेस नहीं चाहिए, एनवायरनमेंट इज आल्सो स्टेबल, एक्सपैंड करना एडवाइजेबल नहीं है, रैपिड एक्सपैंड माइट, firm might want to stabilize and consolidate. बार बार expansion हो चुका है and they want to have a stability.
I'll answer your question, Pravash. Just give me a moment and let's just complete the last question first, and then I'll answer your question. What do you understand by diversification? Distinguish between concentric and conglomerate. Concentric क्या होता है? एक ही वो चीज यूज करके आप एक नई चीज निकाल लेते हो, ठीक है? एक ही आप वो चीज यूज कर रहे हो, एक ही रिसोर्स यूज कर रहे हो, एक ही प्रोसेस यूज कर रहे हो, वहां से आप एक और नई चीज प्रोड्यूस कर देते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? दो डिफरेंट, अनरिलेटेड, ये दोनों रिलेटेड ही नहीं है। यहाँ पे मिल्क इंडस्ट्री है और ये मान लो क्लॉथ इंडस्ट्री है। ये दोनों अगर एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्लब कर लेते हैं, कुछ बनाते हैं, मिल्क प्लस क्लॉथ, कोई प्रोडक्ट अलग अलग बेचने लग जाते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिक। दे डू नॉट हैव एनी रिलेशन, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है, ना मिल्क और क्लॉथ में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? सो दिस इज द बेसिकली द मेजर डिफरेंस। इसके बाद आप एग्जाम्पल लिख दो, थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख दो, पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल इज मैगी। मैगी ने जब अपने नूडल्स बनाए थे तो इट बिकेम क्वाइट फेमस, राइट? नूडल्स क्वाइट फेमस हो गए, एंड आई थिंक मैगी इज स्टिल, हम ना नूडल्स इज इक्वल टू मैगी ही बोलते हैं। नूडल्स भी खाना होता है तो हम ये बोलते हैं मैगी बना दो, राइट? वी रेयरली से इन दी होम कि नूडल्स बना दो मम्मा, या भैया या भाई, जो भी बहन, जो भी जिससे भी बनाते हो, ठीक है? या खुद भी बनाते हो, तो हार्डली वी यूज द वर्ड कि मैं नूडल्स बनाने जा रहा हूँ, वैसे मैगी बनाने जा रहा हूँ। तो मैगी वॉज क्वाइट फेमस। देन मैगी ने क्या किया? मैं कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे, जैसे कि मैगी सॉस, केचप, राइट? क्या किया इन्होंने? सेम सेम गुडविल यूज किया, सेम प्रोसेसेस यूज किया, सेम एडवर्टाइजमेंट्स यूज किया, सेम सेम जो नूडल्स के लिए यूज किया था वही यूज किया, एंड देन लॉन्च कर दिया केचप भी। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है? नूडल्स के बाद उन्होंने केचप बनाना शुरू, हाँ, मैगी मसाला भी बनाना शुरू कर दिया, मसाला, ठीक है? So they started making masala, Maggi masala also, right? Because they thought कि Maggi में जो मसाला था, that was actually, that has a different taste, right? So they wanted कि इसको अच्छे से प्रमोट करें, ठीक है? So that is a good example of concentric diversity। ये बता दिया, एक बार आंसर रीड करते हैं, सजेस्टेड आंसर, और एक बार देखते हैं, बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर्स डिटरमाइन इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। डिस्कस। ये पॉर्टर के 5 फोर्सेस में से एक है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। जब सप्लायर ह्यूज क्वांटिटी में होते हैं एंड उसके जो बायर्स हैं, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, जो खरीदेगी उनसे सामान, वो भी ज्यादा होती है, सप्लायर बार्गेन ज्यादा कर पाते हैं। Whereas अगर उसके जो क्लाइंट्स है, सप्लायर के जो क्लाइंट्स हैं वो कम होते हैं, तो क्या सप्लायर्स बार्गेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो दे लिमिटेड, नहीं कर पाएंगे। यस, तो दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। मैच्योरिटी वाली तो बात कर ली थी हमने, कॉन्ग्लोमरेट एंड कॉन्सेंट्रिक के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं। The first difference is related products, unrelated products. Linkages is linked to the existing business. मैंने बता दिया, जैसे मैगी का एग्जांपल दिया, there is no linkages. Reason for pursuing, the most common reason for concentric is opportunity मिल रहा है, मैगी का मसाला opportunity मिला, मैगी का केचप उन्हें opportunity मिला, ठीक है? opportunities current lines are limited। conglomerate कब करते हैं? तो आप जैसे देख लिया मिल्क और इधर क्लॉथ, आपको लग रहा है कि यार इधर ना थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम करते हैं, काम करते हैं, मिल्क सेक्टर से ज्वाइन कर जाते हैं और हम मिल्क भी प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेट डिफरेंशिएशन, ठीक है? एंड देन सप्लायर का कैसे कैसे होगा? जब बायर्स के लिए वो क्रूशियल है, बायर्स के लिए ऐसा लगता है कि वो ही एक लौते हैं, तब बायर्स किसी भी पैसे पे खरीदने को तैयार हो जाएंगे। स्विचिंग कॉस्ट इज हाई और लो, वो इंश्योर करते हैं, क्या करता है? बार्गेनिंग पावर। अगर वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड है देन बायर्स, ठीक है, तब भी लेस सप्लायर्स मोर बायर्स, तब भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तब भी वो कमांड कर पाएंगे, अपनी बातें टर्म्स रख पाएंगे। यस,
So with this, we have completed the entire May 22 question paper. And I had got a question from Prabhash. Time management कैसे करें ma'am in a day? What time to devote for theory and practical? आई एम नॉट श्योर टाइम मैनेजमेंट ऐसे नहीं होता कि आप थ्योरी प्रैक्टिकल देखो, आप ये देखो आपका क्या हो गया है ज्यादा और क्या नहीं हुआ है। बहुत बार पढ़ाई स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, so in that case you can pick up interesting chapters, interesting subject, ठीक है, पिक कर लो, and then you can move on to something that is to you have not studied, ठीक है। और ऐसे बात करिए अगर आपको आपकी सारी तैयारी हो गई है, जस्ट गोइंग फॉर रिविजन, दोनों को टाइम इक्वली देना चाहिए आई थिंक। थियोरी को किसी ऐसे टाइम पे कर लो जो ऑफ टाइमिंग है, जहाँ तुम थक चुके हो या तुम अब बस आराम से सो के पढ़ना चाह रहे हो। मैं तो थियोरी तभी उठाती हूँ जब मुझे ऐसे लेट के पढ़ना होता है। प्रैक्टिकल में तो यू नीड फुल अटेंशन, पूरा नोटबुक कॉपी सब चाहिए होता है। व्हेन इट कम्स टू थियोरी मैं आराम से पढ़ती हूँ, तो आराम से मैं सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ, लेटे लेटे सो भी जाती हूँ, वो भी है, ठीक है। बट फिर हाँ 10-15 मिनट में आई कम बैक एंड देन ट्राई टू जॉय थ्योरी, okay, मस्ट गो थ्रू चैप्टर्स पे, और धीरे धीरे थियोरी को ना रिपीटेड रिविजन, फर्स्ट डे किया थोड़ा सा, सेकेंड डे उसके मिला के कुम्युलेटिव करके रिविजन करो, तभी थियोरी के रिविजन का। टाइम मैनेजमेंट शुड बी डिवाइडेड एंड डिसाइडेड बाय योर ओन सेल्फ एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। उस पे आपको ज्यादा स्ट्रेंथ है उस पे ज्यादा टाइम मत दीजिए, थोड़ा सा एवरेज टाइम दीजिए, एंड जिस पे कम स्ट्रेंथ है उस पे ज्यादा। तो दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। थोड़ा सा फोन बंद कर दो, थोड़ा सा सेपरेट हो जाओ चीज। टाइम ही टाइम है यार, बहुत टाइम मिलता है एक दिन में, कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्लान स्ट्रेटेजिकली। Okay, bye everyone. See you again in the next video. Probably we'll be starting with RTPs and MTPs, May and November. May 23, November 20. Okay. So again, last information, if you are buying any of the Unacademy subscription, please use my code ISHA. Yeah, this is ISHA. Bye bye.